महत्वपूर्ण बिंदु दे रहा हूं, तो जिसमें आप मरीज खुद भी या फिर आप खुद भी इस बिंदु को एक्टिवेट करके द होल बॉडी सिस्टम को आप ज़रूर एक्टिवेट कर सकते हैं. सो दैट पॉइंट टू बी कॉल्ड एज ए, चाइनीज में कहते हैं सु सन ली. तो इसका मतलब है, सु का मतलब है लेग और द फुट. द अदर सन का मतलब है इन चाइनीज देयर इज 3, एंड ली का मतलब है यूनाइट टुगेदर. There is one other meaning which we call as a 3 miles. Right? So now you understand the foot uniting in one point. The lower extremities are united by one point. That point to be called as a Susanle. So even when we look at this, at the ancient people called as a Susanle doctors, which we call as a barefoot doctors. So these doctors is always good not to treat the disease, but to treat for the prevention of the diseases. That is the beauty. When we look at this, when the person is feel the fatigueness and lethargy and weakness, where the abdominal system is not functioning properly, when the digestive system is not working, where the person is not feeling hungry, even that indicates when the mother, that what we are getting, nourishing the nutrition from the stomach to the extremities, upper extremities, lower extremities में आपको energy नहीं पहुंचती, then it indicates the muscles weakness. When the muscles gets weakness, when the body gets weakness, when the body gets weakness, our mind gets weakness. So therefore this point is abundantly good to treat for the various illnesses, but the point is exactly, location is where exactly it is 3 chun distal to the eye of the patella and 1 finger breadth lateral to the border of the tibial tuberosity. आप जब भी आप इस पॉइंट को अगर प्रॉपर लोकेशन एनाटॉमिकली देख लीजिए, इवन सम मोस्ट ऑफ द एक्यूपंक्चरिस्ट कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, वेयर द पॉइंट इज लोकेटेड एग्जैक्टली ऑन द बॉर्डर पे लगा देते हैं, बट द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द, so 1 finger breadth lateral to the border, मगर this point is located on the anterior tibialis muscles पे, this point is located on the anterior tibial nerve पे, this point is located on the various nervous system is connected, the branches of the sural nerve, branches of the peroneal nerve, branches of the tibial nerve, and branches of the pectoral nerve, which we call as a peroneal nerve. These are the various tibial nerves are connected to this particular point, but properly on the same muscles you need to activate this point to get they obtain the maximum results. अगर कोई भी अगर बंदा अगर वीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को 7 डेज इन ए वीक, अगर आपने 10 डेज में 7 डेज अगर एक्टिवेट कर दिया इस पॉइंट को, जरूर इस पॉइंट में लाभ ही लाभ मिलेगा. अगर पर्सन इज एक्टिवेटिंग एज ए टॉनिक टू द स्टमक, एज ए टॉनिक टू द बॉडी, बोलते हैं ना अल्फा इन यूनानी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन, अगर आपने कोई भी साइपॉन सिरप और डेक्सोरन सिरप इन द वेस्टर्न मेडिसिन, या कुछ भी एक शरबत होती है, इस तरीके से भी आर ट्यूनिंग टू द स्टमक इन दैट वे, दिस पॉइंट इज विदाउट एक्टिवेटिंग एनीथिंग, विदाउट टेकिंग एनीथिंग सिंथेटिक, नेचुरली इस पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे. ये बहुत सारे रिसर्च हुआ है रैबिट के ऊपर, फ्रैग के ऊपर, वेरियस एनिमल्स के ऊपर. व्हेन यू एक्टिवेट दिस पॉइंट, अगर थोड़ी देर के बाद इसमें भूख लगना शुरू हो जाती है, व्हेन द पर्सन इज गेटिंग द गुड एपेटाइट, देन यू अंडरस्टैंड यू आर न्यूरिशिंग टू द एनफ फूड टू द स्टमक, दैट्स ऑलवेज इज गुड फॉर द हेल्थ. जब अगर इसमें अगर आपने डाइजेशन पूरी तरह से नहीं हुआ, आप याद रखिए इनटेक ऑफ द फूड यू आर नॉट टेकिंग अबेंडेंटली, दैट लीड्स टू द इलनेस. इसीलिए जब भी आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे, दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट इज एक्टिवेटेड ऑन द सरफेस लेवल, दिस यू आर एक्टिवेटिंग टू द स्प्लीन. व्हेन दिस पॉइंट टू बी एक्टिवेटेड स्लाइटली डीपर लेवल, दैट पॉइंट इज वर्क फॉर द फर्स्ट पॉइंट इज वर्क फॉर द स्टमक, then further slightly deep it works for the spleen, then further again it is slightly deeper level it goes, that works for the lungs, again it further you go for the deeper level it works for the heart system, अगर आपने further inner deep अगर गए, so that works for all the internal organs in our body. That is the beauty and quality of this. That's the reason this point to be called as a command point.
Due to that reason, this point to be called as a homeostatic point, immune enhancing point, tonification point, Gao-Hua command point, right? This point to be activated as a mother point and motor point for the muscles. This point is lower Hisi point for the stomach, right? So the numerous conditions of the disorders, and because of when the Qi and blood is deficiency in the body, this point to be activated abundantly in order to promote the normal health state. So once you activate this point precisely, certainly the nervous system will be activated, the muscular system will be activated, where the peroneal deeper now communicating to the ankle and foot, so that also activated. अगर किसी को foot drop है ऐसे condition में, किसी को asthma conditions है उसमें, और किसी को coronary artery disease है, और किसी को facial paralysis है, common cold condition है, tooth pain है, even in this way, so many conditions we can treat by activating this point. So therefore, you remember this known and unknown cases of the conditions, idiopathic, which we call as the unknown pathology of the disease. Though even any etiology of the disease, even that condition, agar moxibustion देंगे, needle to be applicable for the span of, even 1 chun agar needle लगाएंगे, efficacy नहीं होगा. 1.5 chun to 2 chun, if the that clumsy person is there, then that condition you can activate this point is 2 chun deeper needling, because of the muscles this point to be activated, this point to be treatable for all kinds of the muscle. That indicates आपने बहुत ही deeper level में आप needle लगाइए ताकि it touches to the all the muscles. अगर muscles को muscle आप treatment कर सकते हैं तो इस points को deeper level में activate करके आपने whole muscular system, whole digestive system को आप activate जरूर कर सकते हैं. So in order to flow the chi and blood and body fluids को regulate करने के लिए, the point is very abundantly good to treat for the known and unknown cause of the diseases. Even sadhus, when they were practicing as a, कोई भी अगर उन लोग प्राणायाम करते थे, योगा करते थे, when they sit in the cross legs, अगर क्रॉस लेग्स बैठने के बाद एक बिंदु आपको प्रॉपर पोजीशन पे आप टच करो स्टमक 36, आसानी से उस बिंदु आपको ये 4 फिंगर्स को मिल जाते हैं. उस 4 फिंगर्स के माध्यम से आप प्रेशर दीजिए, जरूर आप देखिए, ये आप ट्राई कीजिए. जब when you are trying this के आप उस नी पेन के लिए, जब भी the person is suffering for the osteoarthritis of the knee, no doubt the Dubi point is good. At the same time, you just activate the point to be called as a Sus and Lee. जब वो पॉइंट को आप बिंदु को आप 4 फिंगर से आप प्रेशर देते रहेंगे, स्टमक 36, अनदर पॉइंट कॉल्ड एज ए लैम्बी, द इंटेस्टाइन के लिए intestine के लिए, स्टमक के लिए, दोनों पॉइंट यू आर एक्टिवेटिंग, then you are activating to that particular organ, because of whenever you wanted to add up suddenly, remember मैंने कहा large intestine 11 point chu chi also you add up, large intestine 11 also good point to treat for the knee arthritis. Even that way, that also connected. The another point, the stomach belongs to the yang ming, large intestine belongs to the yang ming, but both the points you activate L11 bilaterally, you just activate. So in this way you just activate bilaterally large intestine 11. At the same time you activate bilaterally the stomach meridian point, that is stomach 36. Once you activate, you are activating to the Lanby point. Lanby point, a point a 2 chun distal to the stomach 36. That point is good point to treat for the vermiform appendix. मैंने इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप ट्रीटमेंट कर रहे हो. That I mean is that you are activating to the intestine as well. जब intestine को ट्रीटमेंट करेंगे, that also belongs to the yang ming, and the stomach 36 also belongs to the yang ming, which having the synergy effect. समझ गए आप? तो इसीलिए आप याद रखिए, जब भी आप लोगों को किसी को भी अगर बोन रिलेटेड इश्यूज, आर्थराइटिस कंडीशन, स्पेशली नी आर्थराइटिस के लिए आपने इस मसल्स को अटैक, क्योंकि दिस आल्सो अनदर रीजन, दिस कम्युनिकेटिंग टू द सूरल नर्व आके बैक मसल्स जो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स होते हैं, जो दूसरा साइड द यूबी मेरिडियन के मसल्स होते हैं, उस मसल्स भी इज द रीजन टू कॉज द नी आर्थराइटिस. जब आपने पेरोनियल नर्व, जब एंटीरियर टिबियालिस मसल्स वीक हो जाते हैं, that also reason to cause the knee pain. No doubt you wanted to add up another point for the knee arthritis, you can add up another point which we call as a Haything. Haything is the extra point which is located 3 chun proximal to the stomach.
at the center of the patella. So that point is activating the quadriceps muscles. Agar GB33 C young one, that point is GB33, which is located on the IT band, iliotibial band. उस पॉइंट को भी आप एक्टिवेट करके नी आर्थराइटिस को आप ट्रीटमेंट कर सकते हो. Another, the vastus medialis muscles. जब आपने sartorius muscles और medius matalis muscles weak हो जाते हैं, that also get affected because of the ACL tear, which we call as a anterior cruciate ligament tear. Even that condition of muscles weak हो जाते हैं, तो ऐसे condition में उस बिंदु को भी आप activate कर सकते हैं. That point to be called as a SUHI, that is spleen 10. So इस तरीके से cocktail करके आपने पॉइंट्स को एक्टिवेट करके आप नी आर्थराइटिस को ट्रीटमेंट कर सकते हो. बट ओनली वन पॉइंट आई कैन रिकमेंड यू, व्हेन द पीपल आर कंटिन्यूअसली फोकसिंग एंड एक्टिवेटिंग द पॉइंट स्टमक 36, उनके लिए अगर शरीर में ताकत भी बढ़ जाएगी, शुद्धि बढ़ जाएगी और एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी. इसका मतलब ये नहीं कि अगर ज्यादा एक्टिवेट कर देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ जाएगा. अगर भूख ज्यादा लगना भी एक बीमारी है, भूख कम लगना भी बीमारी है. इसीलिए हम लोग एक acupuncture, it works in the positive feedback mechanism and also sometimes is a negative feedback mechanism. दोनों को बैलेंस करने वाला पॉइंट स्टमक 36 है. जब एसेंशियल है तो एक्टिवेट होगा, जब एसेंशियल नहीं है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ये स्टॉप हो जाएगा कि फिर इतना ही ट्रीटमेंट आपको, इतना जितना भी प्रेशर दो वहां पे न्यूट्रल इफेक्ट हो जाएगा. राइट. सो एनी डाउट्स ऑन स्टमक 36? Yes, good. See, as a prophylactic purpose, यानी आप प्रिवेंशन के लिए अगर स्टमक 36 यूज करना है, then certainly you can use it 7 days in 10 days time, or every day you can activate for 7 to 8 days for the prevention. You can activate 10 minutes each day is recommended as a pressure, or maybe you can activate as a needle, or you can use as a moxibustion 10 minutes in a day. Either pressure is maybe 10 minutes bit difficult, but however 2 to 3 minutes pressure is quite enough, or you wanted to use moxa, that is minimum 10 minutes is recommended. You remember when the patient, elderly people are there and for them the energy level is very poor, even that condition you activate this only by using moxibustion. एक थमा दो पेशेंट को, फिर उनको बोलो कि हर एक दिन इस बिंदु को एक्टिवेट करो. 10 days में they feel drastically changes in their leg pattern of sufferings में.